Hello everyone, welcome back to the weekly market updates. I'm Sharik Khadgawat. So for this week, Indian equity markets largely remained in a tight range with heightened volatility. At one side, at higher levels, we have felt the selling pressure, but साथ ही lower levels पे भी buying interest clearly नजर आया. It seems that market got stuck in a tight range in absence of any clear trigger. जहां एक तरफ अब तक यूएस और इंडिया के ट्रेड डील पे कोई फाइनल प्रिंट सामने नहीं आया है, वहीं एफआईएस की सेलिंग प्रेशर बरकरार है. Q4 earnings season has also reached to its final stage and companies के रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स की म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस को लार्जली मीट किया है. हालांकि रिजल्ट्स में कुछ ग्रीन शूट नजर आए, जैसे कि निफ्टी 50 की एबिटा ग्रोथ करीब 8.1% की रही और रेवेन्यू ग्रोथ 6.3% के आसपास रही. वहीं अगर हम निफ्टी 500 कंपनीज की बात करें तो इस बार 183 कंपनीज ने पॉजिटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए और साथ ही 91 कंपनीज के रिजल्ट्स नेगेटिव साइड पर रहे. इस बार के अर्निंग सीजन में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया एंड इट्स नॉट दैट ओनली द लार्जर बैंक्स दैट हैव पोस्टेड स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स बट आल्सो द बैंक्स लाइक ऑफ कैनरा बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज आल्सो पोस्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स. The frontline indices such as Nifty 50 and Bank Nifty have closed on a flat line, जहां Nifty 50 ने कंटिन्यूस अटेम्प्ट के बावजूद भी 25,150 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा. वहीं बैंक निफ्टी वीक ऑन वीक बेसिस पे हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ, बट वीक ऑन वीक बेसिस पे केवल 0.63% के गेन से क्लॉक किए. वहीं ब्रॉडर इंडाइसेस हैव क्लियरली आउट परफॉर्म ऑल द फ्रंटलाइन इंडाइसेस, वेयर स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस हैव पोस्टेड मोर देन 1.5% ऑफ गेन्स ऑन वीक बेसिस. For this week, as clearly evident that Bank Nifty have outperformed, the number one sector which has outperformed all others is PSU Bank with more than 4% of gains on week basis. Number 2 पे रहा मीडिया सेक्टर जिसने 3.36% के गेन्स क्लॉक किए. On the negative side, this week consumer sector have posted negative returns of 2%. नंबर 2 पे रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसने वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.58% के लॉसेस क्लॉक किए. For this week, FIs have turned net buyers with almost 800 crore rupees of buying in the cash segment. वहीं DIs ने week on week basis पे 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की. It is very surprising to see that after being net buyers in the month of April and the first half of the month of May, now FIs are turning their stance to negative. अगर हम डेरिवेटिव सेक्शन की बात करें तो FIs ने अपनी पोजिशनिंग न्यूट्रल से ऑलमोस्ट 70% शॉर्ट साइड में बना ली है पिछले 10 दिनों में. The FIs are changing their stance so fast that it is very hard to interpret that what direction they are taking. But ये clearly evident है that FIs are sellers on the higher levels and DIs are trying hard to absorb all the selling. And this is going to be very interesting to watch that what stance FIs would take in a longer run. For this week, both the precious metal gold and silver have cooled off, and this week alone gold have given negative returns of 1.31%, whereas silver have given almost 0.5% of negative returns on the week on week basis. Brent crude oil के प्राइसेस में इस हफ्ते भी कूल ऑफ नजर आया और वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.82% के नेगेटिव रिटर्न्स क्लॉक किए और करंटली $63.75 पे ट्रेड करता हुआ नजर आया. The enhanced supply from the OPEC countries and the economic slowdown has further dragged the prices of Brent crude and kept it under $65 for the whole week. Surprisingly for this week, Dow Jones, Nasdaq and DAX Germany, all three indices have posted positive results with almost 1 to 3% of gains on week-on-week basis. जहां डाउ जोन्स ने 1.43% के गेंस क्लॉक किए, वहीं डेक्स जर्मनी 2.16% और नैस्डैक वीक ऑन वीक बेसिस पे केवल 0.93% अप रहा. Amid ongoing uncertainty on tariff war, this week also we have witnessed a lot of development from the Trump administration side. President Trump is still continuing with his flip-flop attitude, जहां वीक के दौरान एक बार फिर से उन्होंने यूरोपियन यूनियन पे बढ़ाकर टैरिफ लगाने की बात कही, but as usual at the very next day he has taken the tariffs back and said that we are still in talks with the European Union. This week, very important macroeconomic data for the India has come. On one side, the inflation has cooled off to 3.16% on year-on-year basis, which is the lowest rate since July 2019. And this decline from March 3.34% indicates a steady easing of prices. On the positive side, Indian Forest Reserve have hit the 7 months high mark with almost $4.6 billion of increase and reached to $690.6 billion. But at the same time, Indian trade deficit has widened up by $26.42 billion in the April month, reaching a 5-month high, and this was due to a significant increase in imports, which rose by 19% and reached to $64.91 billion.
Stock in news, Ola Electric has posted very weak set of numbers and they have almost doubled their losses on quarter basis. साथ ही उनके revenues 62% से plunge हो गए हैं और वो mostly हैं because of the intensified competition, operational inefficiencies and regulatory challenges. IndusInd बैंक की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. Already under scrutiny of SEBI, now the higher officials of IndusInd Bank have been found guilty of insider trading. This latest order by the SEBI has raised serious concerns about the corporate governance and the transparency within the bank. This is it for this week. We'll come up with more information next week. Till that time, stay tuned with us. Thank you so much. Jai Hind.